أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear friend, my dear viewers? So, let's start from here the Nurani Qaida, and we will learn in the Nurani Qaida in lesson number 9. So, exercise the about the harakat and the standing zabar and standing zair and standing pesh and huruf madda, walin and tanween. So let's start. First of all, you keep in mind, and this rules is very important. I teach to you first to in Urdu, and second time I teach to you the English. So कायदा नंबर 1, हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा लेटर आ जाए तो मद हमेशा 4 अलिफ होगी। तो इसका मतलब ये है कि 4 अलिफ की मिकदार आपने उस मद को लंबा करना है अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा लेटर आ जाए। और अगर हमज़ा उसी कलमे में है तो उसको मद मुत्तसिल कहते हैं। अगर मद उस कलमे में हो तो उसे कलमे को मद मुत्तसिल कहते हैं और मद वाजिब भी कहा जाता है। तो जैसे कि जा, तो यहाँ अगर देखा जाए तो मद है और मद के बाद जो हमज़ा लेटर आया है और उसी कलमे में है तो एक साथ एक कलमे में आए, तो इसी वजह से इसको मद वाजिब कहा जाता है, मद मुत्तसिल कहा जाता है। और इस मद को लंबा करना है 4 सेकंड के मुताबिक, 4 अलिफ के मुताबिक। फिर आता है अगर हुरूफ मद्दा पहले कलमे के आखिर में हो और इसके बाद हमज़ा जो है दूसरी कलमे के शुरू में हो तो उसको मद मुनफसिल और मद जायज़ कहते हैं। इसकी मिसाल भी दिया है, इन्ना अनज़लनाहु। तो लुक इट, तो यहाँ देखे कि इन्ना आया है और इसके बाद हमज़ा दूसरे लेटर में आया है। तो मद के बाद जब दूसरे लेटर में आया है तो ये मद मुनफसिल है और मद मुनफसिल को यहाँ हम मद मुनफसिल कहेंगे और इसको 3 सेकंड तक हमने इसको लंबा करना है, 3 अलिफ की मिकदार इसको लंबा करना है। फिर दूसरे कायदे की तरफ हम जाते हैं। दूसरा कायदा ये है, अगर कायदा नंबर 2 है, अगर हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन के बाद सुकून हो यानी साकिन हो तो इसको क्या करेंगे, तो वहाँ भी मद होगी। अगर सुकून पहले से ही हो तो उसको मद लाजिम कहते हैं और इसकी मिकदार जो है 5 अलिफ है। उसका मिसाल भी दिया है, जैसे कि आना। तो आना आया है, देखो ये पहले जो है हमजा के ऊपर जो मद है और ये मद के बाद साकिन लेट सनसाइन आया है, तो इसी वजह से इसको 5 सेकंड तक लंबा करना है। अगर सुकून किसी वक़फ़ की वजह से हो तो उसको मद वक्फी और मद आरिज़ कहेंगे और कहते हैं। तो इसकी मिकदार है 3 अलिफ की मिकदार। तो 3 अलिफ की मिकदार कितना बनता है, 3 सेकंड तक आपने इसको अदा करना है। और इसी का मिसाल ये है, यू, हाउ, इस तक आपने 3 सेकंड तक आपने लंबा करना है। इसी तरह जो और भी आता है तो इस पर इस तरह वक़फ़ किया जाएगा। अगर रा भी हो और रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो उसको मोटी पढ़ेंगे और मुंह भर कर इसकी आवाज़ उस तरकीब अदा करेंगे। अगर ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे, उसको मोटा नहीं पढ़ेंगे उसी लेटर को। तो अगर इसके बाद अंग्रेज़ी में जो रूल्स होते हैं, अंग्रेज़ी वाले में इसके रूल्स ये हैं, when a mud letter is followed by a hamza in the same word, it's called mad muttasil, and it's last for alif, and it's last for alif. For example, ja, and second rules. When a mad or lean letter is followed by a sukoon, it's called mad lazim, and its last for 5 alif, according the 5 second prolong that mad, like this: you, how. And the third rule, this is, if the letter ra is a fatha means zabr, or zamma means pesh, its pronunciation heavy. And if it has a kasra means zair, its pronunciation lightly, like this. If a word come at the end of our scissor, when we push and the finally letter is a double fatha means double zabr, we only pronunciation one.
and one zabar one moment of them and drop the other moment other zabar other fatha. Hamza standing zabar a, mim zabar ma, nun zabar na, a mana, a mana. In the time of the stop condition, last letter revealed reading like this: man, man. أعوذ Hamza بالله standing zabar من a, الشيطان wow standing zabar الرجيم wa, بسم الله wa. الرحمن And the standing zabar just prolong الرحيم. one second. Next one, Hamza standing zabar a, noon standing, Hamza standing zabar a, noon zer ni, ya zabar ya, ta double zer tin, a niyatin, a niyatin. Hamza standing zer e, lam standing zabar la, fa zer fi, e la fi. Hamza ya zabar ay, nun zabar na, ayna, ayna. Ba zer bi, ha zer hi, bihi. Jim alif mad zabar ja, jim alif mad zabar ja. Hamza zabar a, ja a. Jim ya mad zer ji, jim ya mad zer ji. Hamza zabar a, ji a. Jim waw pesh ju, ain do zir in, ju in. Kha waw zabar khaw, fa double zir fin, khaw fin, khaw fin. Kha ya zabar khay, ra double pesh run, khayrun, khayrun. Dal standing zabar da, waw standing pesh hu, dal pesh du, da du. Zal standing zabar za, lam zer li, kaf zabar ka, za leka, ra zabar ra, zad waw pizu, razu, razu. Shin alif mat zabar sha, hamza zabar a, sha a. Mim standing zabar ma, lam zer li, kaf zer ki, maliki. Shin ya zabar shay, hamza double zer in, shay in, shay in. Twa zabar twa, ghain standing zabar gha, twa gha. Twa zabar twa, ghain waw zabar ghaw, twa ghaw. Twa ya zabar tway, ra alif double zabar ran, twayran, twayran. Ain alif zabar a, dal double zer din, a din. Ain zabar a, lam standing zabar la, ala. Ain ya zabar ay, nun double pesh nun, ay nun. In the time of the stop condition, ay. Fa ya zir fi, ha zir hi, fihi, fihi. Qaf alif zabar qa, lam zabar la, qala. Qaf waw zabar qaw, lam double pesh lun, qawlun. Qaf waw zabar qaw, lam double pesh lun, qawlun. Qaf alif zabar ka, nun zabar na, kana. Qaf ya zabar kay, dal alif double zabar dan, kaytan. Kaf ya zabar kai, fa zabar fa, kayfa, kayfa. Lam waw zabar law, ha do zir hin, lawhin. Lam ya zabar lay, sin zabar sa, laysa. Mim alif zabar ma, lam alif do zabar lan, lam alif double zabar lan, malan. Nun alif zabar na, ra alif double zabar ran, naran. Mim alif mat zabar ma, hamza do zir in, hamza double zir in, ma in. Waw ya zabar way, lam double pesh lun, waylun, waylun. Yaw zabar yaw, mim do zir mim, mim double zir min, yawmin. Ya zabar ya, ra zabar ra, ha standing pesh hu, yarahu. Ha alif zabar ha, sin zir si,
دال ڈبل زیر دین خا سیدین خا الف زبر خا فا زیر فی زا ڈبل پیش زون حافظون دال الف زبر دا فا زیر فی قاف ڈبل زیر کن دا فیقن ہین الف زبر شا ہا زیر ہی دال ڈبل زیر دین شاہدین عین الف زبر ہا با زیر بی دال ڈبل پیش دون عابدون عین الف زبر آ با زیر بی دال ڈبل پیش دون عابدون عین الف مد زبر آ عین الف مد زبر آ حمزہ زیر ای لام الف ڈبل زبر لن لن غین الف زبر غا سین زیر سی قاف ڈبل زیر قین غا سیقین نون الف زبر نا صاد زیر سوی را ڈبل زیر رین نا سویرین واو الف زبر وا لام زیر لی دال ڈبل زیر دین والیدین حمزہ زبر آ عین واو پیش او زال پیش زو اعوذو زال پیش زو اعوذو حمزہ زبر آ کاف یا زیر کی دال پیش دو عقیدو خا زبر خا یا زبر یا خا الف زبر خا فا پیش فو یا خافو یا زبر یا دال سٹینڈنگ زبر دا ہا پیش ہو یا داہو یا پیش یو قاف الف زبر قا یقا لام پیش لو یقالو تا پیش تو را سٹینڈنگ زبر را با الف ڈبل زبر بن ترابن خا زیر خی این الف زبر سا با الف ڈبل زبر بن حسابن سین پیش سو با الف زبر با تا الف ڈبل زبر تن ثباتن سین زیر سی را الف زبر را جیم الف ڈبل زبر جن سراجن سین زبر سا لام سٹینڈنگ زبر لا میم ڈبل پیش مون سلامون شین زیر شی دال الف زبر دا دال الف ڈبل زبر دن شدادن شین زبر شا را الف زبر را با الف ڈبل زبر بن شرابن صا زبر سوا واو الف زبر وا با الف ڈبل زبر بن ثوابن